Bismillahirrahmanirrahim. Class. Let's start the second part of our lecture 6. The first part we have studied how to calculate quantiles for control data. In this part we will study calculation of quantiles for group data. The first quantile is the quartiles. जैसे हमने देखा कि क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स अनग्रुप डाटा के लिए कैलकुलेट किए जब हमने वही लाइंस फॉलो की जो कि हम मीडियन में फॉलो करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमने क्वार्टाइल्स को फाइंड करना है फॉर द ग्रुप डाटा तो हम बिल्कुल उन्हीं लाइंस को फॉलो करेंगे, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि हम मीडियन के लिए करते थे फॉर द ग्रुप डाटा। मीडियन में हम मीडियन क्लास कैलकुलेट करते हैं बाय फाइंडिंग ए मीडियन n/2। हम n/2 कैलकुलेट करते हैं और जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हम लोग देखते हैं कि किस क्लास में वो ऑब्जर्वेशन लाई करेगी बाय यूजिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हम n/2 की जगह jn/4 फाइंड करेंगे। अगर हम j1 फाइंड कर रहे हैं तो हम n/4 क्वांटिटी फाइंड करेंगे, क्लास लोकेट करेंगे। अगर हम q2 कैलकुलेट करें तो हम 2n/4 फाइंड करेंगे, 2n/4। अगर हम q3 फाइंड करें तो हम 3n/4 फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कौन सी क्लास में हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन लाई करें, उस क्लास को हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद सिलेक्टेड क्लास का हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री इज l, सिलेक्टेड क्लास की हाइट इज h, सिलेक्टेड क्लास की फ्रीक्वेंसी इज f, सिलेक्टेड क्लास से प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय c। ये हमारे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे Q1। जब हम Q1 कैलकुलेट करते हैं, जब हमें Q1 कैलकुलेट करना है तो जो फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज n/4। n/4 नंबर हमने देखना है कि which ordinal number is n/4। हमने फर्स्ट क्वार्टाइल n is 60, so 60/4 is equal to 15। so we will see कि 15th ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी क्लास में लाई करेगी। अभी हम इसको देख के फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो जब हम कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं हमने देखना ये है कि हमारे पास 15th ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में लाई कर रही है। तो वो कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास में हमारे पास जो कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 9। इसका मतलब है 65 से 84 तक फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे क्योंकि हम 15th ऑब्जर्वेशन में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट क्लास की जो कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 19। इसका मतलब है कि जो 15th ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास इस सेकंड क्लास में लाई कर रही है। ये जो सेकंड क्लास है दैट इज और सेलेक्टेड और रिक्वायर्ड क्लास। हमारे पास यहाँ पे हमारा Q1 जो है वो लाई कर रहा है जो कि हमने कैलकुलेट कर। अब ये हमारे पास क्वार्टाइल क्लास जिसमें हमारा डिजायर्ड क्वार्टाइल लाई कर रहा है। अब सिलेक्टेड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाय L, सिलेक्टेड क्लास की फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय F एंड सिलेक्टेड क्लास से प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज C।
And what is age? Age is class height, which is equal to 20. Okay. Q1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं. Q1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q1 is equal to L plus, ये हमारे पास Q1 का फॉर्मूला है. वैल्यूज हम लोकेट कर चुके हैं, हम वैल्यूज पुट कर देंगे. 84.5 हमने वैल्यूज पुट कर दी. यहाँ पर हमारी जो सिलेक्टेड क्लास की थी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास Q1 आ गया 96.5. This is Q1 for the required, for the given data. Interpretation क्या है हमारे पास? 96.5 is a point in the data set below which 25% observations lie, or we can say 75% observations lie above 96.5. This is very important to remember the interpretation of the results. Now we will calculate Q3 for the given data. When we have to calculate Q3, we will find 3 n by 4 observation. 3 n by 4 हमारे पास क्या है? 3 into 60 divided by 4, which is equal to 45. 45th observation is the observation that we need. 45th observation is Q3. अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये 45th observation lie कहाँ पर है, in which class. ये क्लास की हमारे पास Q1 की. This is for Q1. Okay. अब हमें Q3 फाइंड करना है. Q3 के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सी क्लास है. अब तक हम फर्स्ट क्लास देखते हैं इसकी, जो हमारे पास कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 9. सेकेंड वन इज 19. यहाँ पे 45th ऑब्जर्वेशन नहीं है. थर्ड पे मूव करेंगे, हमारे पास कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है 36, यानी कि 45th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी लाई नहीं करी. इन द फोर्थ क्लास कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 46. इसका मतलब है 45th ऑब्जर्वेशन हमारे पास इस क्लास में लाई है. दिस इज अ रिक्वायर्ड क्लास. हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे. Now this one is a selected class for Q3. Okay. ये हमारे पास Q3 के लिए क्लास. तो selected class की lower class boundary is L. Selected class की lower class boundary is L. Frequency is F. Selected class से previous class की cumulating frequency is represented by C. Okay. हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे. और फॉर्मूला is इसको वैल्यूज पुट कर देंगे 124.5 into plus 20 divided by 10, 45
minus 46. 35 minus 36. ये आपके पास कैसे है? तो जब हम कैलकुलेट करेंगे it will be 142.5. So our third quartile for the given data set is 142.5. And what is the interpretation? Interpretation is there are 75% observations lies between below 142.5. Okay. Now let's move to the deciles for the group data. In deciles, the only difference occurs in here J and button. J represents the place of decile, and as it is decile, it divides data set into 10 equal parts. We divide it by 10. The rest of the procedure is the same. Let's calculate 9th decile for the given data. When we have to calculate D9, first we have to calculate 9 n by 10, which is equal to 54. So D4 is the 54th observation. Now we will see in which class 54th observation lies. In 4th class we have cumulating frequency 46, in 5th cumulating frequency is 51, in 6th cumulating frequency is 55. It means 54th observation lies in this class. So this is our required class. We will select this class. This is 9th decile class. Our 9th decile lies in this class. This is D9. The lower class boundary of the selected class is L. Frequency of the selected class is F. And cumulating frequency of previous class is C. Now we will find D9. The formula is L plus H by F 9 n by 10 minus C. We will put values 164.5, 164.5 plus age is 20, frequency is 4, 54 minus C is 12. By calculated this, we will have D9, that is 179.5. And what is the interpretation? What does this point gives us? This point 179.5 tells us that there are 90% observations lies below this point. Now we will move to the percentiles.
Percentiles for group data. Again, the difference comes here. JN by 100. हम परसेंटाइल फाइंड करें तो हमारे पास यहाँ पे जो डिवीजन में आ जाएगा वो 100 है. Let's find 81 percentile for the given data. When we have to find 81 percentile, first we have to calculate JN by 100, and this is equal to 48.6. So our P8 is 48.6 observation. Now we will see where this observation lies. By using cumulating frequency, we are able to locate that our required observation lies in 5th class. And this is this class. This class. This is a required class. Now, the rest of the procedure is same. This is our selected class. Lower class boundary of the selected class is represented by L. Frequency of the selected class is represented by F. And cumulating frequency of the previous class is represented by C. Now, P8 is here we have 81 N by 100 minus C. By putting and here is our 154.9. This is our P81, 81th percentile. And what will be the interpretation of this point? P81 or 154.9 is a point in our data set below where 81% observation lies. Okay, this is all for lecture 6.